Hi, Mridula. How are you? Good morning, everyone. Good morning, doctor. I'm fine. How are you? All good? Good morning to everyone here. Welcome to this session with BabyChakra. I am Mridula and your host for this afternoon. I'm very happy to announce that we have Dr. Juhi Saxena here with us. Join us on this live session to discuss some really important topics morning. So before we begin this session, audio a great and general insight into baby chakra and connection of pregnant women. And we get information to all the parents with life easier. And on that note, I'd like to start our topic today. We are going to have an informative discussion today on useful tips for easy labor and delivery. And we have Dr. Juhi Saxena joining in for the session with us today. And I'd like Dr. Juhi Saxena to introduce herself. Please welcome her. Hi, Mridula. Can you please give us a brief introduction? Yeah, thank you. And I think there was a little bit of technical glitch. There was a difficulty in connecting, but sorry for that. I am Dr. Juhi Okay. Saxena, a physiotherapist who is mastered in obs and gynae. That's basically a pelvic floor therapist or a women's health therapist. I'm working in this field since last 4 years, and I have been associated with leading maternity hospitals like CK Birla Hospital, which is for women health. I've been associated with a lot of gynaes working in Gurgaon to achieve natural birthing and to maintain ease during the pregnancy. And I am working in Gurgaon currently with my clinic named as Arogyam Physio, which is based in Gurgaon. Okay. And my sole focus of practice is to improve women health, be it during pregnancy, be it after pregnancy, or wherever I can help is just the helping of women health. Oh wow, that's amazing. That's really nice. And thank you for joining us today and spending some time for our valuable audience. Thank Um, you. we did have another panel, as I said, Dr. Vijayalaxmi was supposed to have you telling us all good things about the most difficult part of life for a woman, that's childbirth. It is actually a lady very anxious at any stage, I I think. must tell you one thing, it's not that difficult. What we have made it by saying it, I saying right? exactly, yes. Everyone only talks of labor as a fear or delivery as a fear itself. That's why we are already very anxious about it. Yes, इसलिए हम इतना डर that's true. जाते हैं, ओ इतना डरने वाला होगा, इतना ज़्यादा पेनफुल होगा। अगर हम उसके बारे में इतना डरावना पहले नहीं सोचे तो शायद वो इतना डरावना ना हो। I completely agree to it. I really do. So, from exercise to water therapy, I think every mom wants to understand what helps and what doesn't help when it comes to preparing for and coping with labor. Some women choose to give birth using no medicines at all, relying instead on relaxation techniques and controlled breathing for pain. So, we'll discuss what's the best way to address this topic in depth. And I should begin with a few questions with you, Doctor. Can you Right, explain about the labor for all moms who are expecting for first time? The process true, of labor. right. Labor is actually the birthing process that we have, राइट। जब बच्चा बॉडी से बाहर आता है, जब उसके लिए पेन स्टार्ट होते हैं, तो जब पेन स्टार्ट होते हैं से लेके जब तक वो बाहर आता है, वो जो पूरा प्रोसेस है, वो पूरा एक फेज है, उसको हम लेबर पेन बोलते हैं, राइट। लेबर फेज को जनरली मेडिकली हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। 3 Okay. फेजेस में फर्स्ट इज वेयर वी हैव वेरी लाइट कॉन्ट्रैक्शंस, राइट। कॉन्ट्रैक्शंस हैव जस्ट स्टार्टेड, आपने फील करना स्टार्ट हुआ कि कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। Whereas second phase में
और फर्स्ट फेज में आपका डायलेशन होगा सर्विक्स का, बट इट इज़ वेरी बेयर मिनिमम, लाइक 1 to 3 सेंटीमीटर के अराउंड ही डायलेट होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है. नाउ व्हेन द कॉन्ट्रैक्शंस हैव स्टार्टेड फर्दर, कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी बढ़ गई, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई और इंटरवल कम हो गया और हाँ जी. डायलेशन बढ़ गया, डायलेशन भी बढ़ गया सर्विक्स का, दैट इज योर सेकेंड फेज वे एंड इन दैट यू डिलीवर आउट द फीटस. बेबी बाहर आ जाता है. जब बेबी बाहर आ जाता है तो टेक्निकली डिलीवरी पूरी नहीं हुई, बट नॉन टेक्निकली बच्चा बाहर है तो डिलीवरी हो गया. डिलीवरी जब खत्म होता है, जब बेबी बाहर आने के बाद जो अंदर बचा हुआ उसका प्लेसेंटल कॉर्ड है वो पूरा बाहर आएगा, जो म्योटिक फ्लूइड बचा हुआ है वो भी पूरा बाहर आ जाएगा. दैट इज फेज 3 ऑफ डिलीवरी. जब वो सारी चीजें यूट्रस से बाहर आ गई, यूट्रस पूरी तरीके से खाली हो गया, दैट इज कंप्लीशन ऑफ योर लेबर. Okay. So that is a process of labor which is divided into 3 phases. Oh, that's okay. Even I wasn't And aware of it. what we have heard or seen in the movies is बस वो contractions आए, मदर ने चिल्लाना शुरू किया, बच्चा बाहर और लेबर खत्म. I think we should give a lot of credit to the movies also to increase the fear of labor and Agree. delivery, I think. Totally agree with it. Yeah. And I'd like to ask you, is it right to exercise during the last trimester, which will help for delivery? Is it right that you should keep It's exercising right. during that? Yeah. See, the pregnancy whole itself is divided into 3 phases: trimester 1, trimester 2, and trimester 3. So if your gynae gives you a go ahead, you may start it in trimester 1 itself. But if there's some complication or it's a precious one where you have undergone some issues previously, then you are given a go in second trimester. Second trimester, as from the point of view of a physiotherapist or an exercise expert, is easy going month where you can play. Play means you can do most of the exercises forms, right? Because there is not too much of the weight which has come in, and it is easy phase. You cannot achieve delivery, like labor pain भी इतनी जल्दी शुरू नहीं होता उस stage में, right? So 6-7 month is considered like quite safe. 5th 6th 7th is ठीक है, उसमें आप अच्छी exercises कर सकते हो. जब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड ट्रिमेस्टर में, जो हमें हमारी डिलीवरी के बहुत पास लेकर आता है, उसमें हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे. अगेन हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे करना है, किस पे करना है, वो हमें गुड टू गो मिलता है हमारे गायनेक से. अगर कोई Okay. भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है एंड आपके गायनी आपको अलाउ करती है कि आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो, फिर देयर कम्स द रोल कि हम क्या एक्सरसाइजेस करें. तो जब हम थर्ड ट्रिमेस्टर में ऑलरेडी आ चुके होते हैं, हमें पता होता है हमारी डिलीवरी बिल्कुल ही नियर बाय है, हमें उस टाइम पे फोकस करना चाहिए कि जो हमारी पेल्विस है, जो एरिया पेल्विस का जिसमें हमारा बेबी इंगेज्ड है, उस एरिया को हमें वाइडन करने की कोशिश करनी है ताकि वो इजी रास्ता तैयार हो जिससे बेबी स्लाइड आउट हो जाए बाहर. Okay. अभी तक हमने उसको ऐसे प्रिशियसली सेव करके रखा था कि बस अभी ये नीचे नहीं आए, इधर नहीं जाए, सब कुछ ठीक है. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर टू ओपन दिस कैनाल सो दैट द बेबी स्लाइड्स आउट ऑफ इट, राइट. एंड बर्थिंग में भी यही कैनाल की ओपनिंग होती है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बेबी स्लाइड आउट होता है, उसमें पेन होता है. तो अगर हम प्री स्ट्रेचिंग और प्री स्ट्रेंथनिंग करके रखेंगे तो हमें लेबर के टाइम पे पेन कम फील होगा. सो यू वुड हैव हर्ड पीपल सेइंग स्क्वाटिंग करनी चाहिए. हमने पोचा लगना स्क्वाटिंग स्टार्ट कर दिया था हाँ जी. लास्ट में, और तो कुछ नहीं किया था, तो स्क्वाटिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, राइट. Hmm. हमने वॉक करना स्टार्ट कर दिया था. जनरली दीज आर द थिंग्स जो मदर्स करती हैं. उनको कोई एक चीज़ पता हो, शुरू कर दिया. helps us in maintaining it. Squatting, पोछा मारना यूज्ड टू हैपन पुराना एंशिएंट टाइम आल्सो. उसमें भी एक तरीके का Yes. एक्सरसाइज था जिसमें Yes. हम अपना पेल्विस ओपन करते, Exactly. राइट. हम लंजेस कर सकते हैं अगेन जिसमें हम थोड़ा वाइडनिंग करें. अच्छा, लास्ट सेमेस्टर में हमारा एम होता है वाइडनिंग, बट इसका एम ये नहीं है कि हम अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर डालें पेल्विस पे. सो वेरी नॉन टेक्निकल, असाधारण सी बात है. अगर हम रबर बैंड को पहली बार खींचेंगे तो वो थोड़ी टाइट होगी, दोबारा खींचेंगे तो थोड़ी लूज होगी, थोड़ा ज़्यादा खींचेगी, राइट. तो हमारे मसल्स भी इसी तरीके से होते हैं.
एक बार में हमने बहुत ज़्यादा खींच दिया, वो बहुत पेनफुल होने वाले हैं हमारे लिए। सो हमें एक बार में अचीव नहीं करना, एक बार में 90% स्ट्रेच नहीं करना। स्लो एंड जेंटल हमारा की होना चाहिए एक्सरसाइजेस के लिए, एंड ग्रेजुअली अपने आप को फोर्स करना चाहिए। सपोज आज हमने इतना स्ट्रेच किया, ठीक है, वील मेंटेन, नेक्स्ट डे वील इंक्रीज जस्ट अ बिट ऑफ इट, बट वील नॉट ट्राई टू स्ट्रेच फुल इन वन गो। सो स्ट्रेचिंग ऑफ पेरिनियम, चाहे आप लंजेस हो, बटरफ्लाई पोजेस हो, स्क्वाटिंग हो, ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती हैं नॉर्मल डिलीवरी अचीव करने के लिए। And I'd like to ask you, okay, what are the tips for easy labor and delivery? Easy labor will be easy if you're full. Right. The first thing to achieve easy labor is remove the fear. ये इतना डरावना नहीं होगा। अगर हमने उसको डरावना सोचा बनाया तो डेफिनेटली इट्स गोना बी वेरी पेनफुल, राइट? डिलीवरी नॉट ओनली एक्सरसाइजेस, सम एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं, वो भी एक्सरसाइजेस के साथ पहले इम्पॉर्टेंट है। सपोज आप स्ट्रेस नहीं लो, एक्सरसाइजेस के काम से पहले आपको स्ट्रेस पे काम करना है, परेशान नहीं होना। ये नहीं सोचना कि ये बहुत पेनफुल होने वाला है, ये बहुत हाँ जी, डरावना होने वाला है, नहीं, इट्स अ प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है ना। नेचुरल प्रोसेस इतने डरावने नहीं होते, बस हम उनको बना देते हैं, राइट? अपने आसपास का जो एम्बियंस है उसको लाइट रखिए। व्हेनेवर यू इंटू लेबर पेन और यू अप्रोचिंग टूवर्ड्स लेबर पेन, उस एटमॉस्फेयर को लाइट रखिए, टेंस्ड नहीं रखना, राइट? okay, अपने पार्टनर से बात करते रहिएगा, या आपके साथ जो भी कंपेनियन है आप उनसे बात करिए। कुछ भी जो आपको स्ट्रेस दे चीज़ें, उनके बारे में ना तो सोचना है ना उनको करना है, okay, राइट? हाँ जी, हमें उस टाइम पे क्या याद आता है, ओ मेरी फ्रेंड ने ये बताया था, ये पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है, अब शिट अब मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है, या मेरे इस रिलेटिव ने बोला था उसके साथ ऐसा हुआ, क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं सोचनी, हमें सिर्फ अच्छा सोचना है। मेरा हाँ जी। पेन बहुत कम होगा और मेरी ईज़ी डिलीवरी होगी, राइट? नेक्स्ट मेडिटेशन हम एक्सरसाइज़ेस करते हैं। येस, आई एम कमिंग टू दैट ओनली। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी लाइफ में म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? जब हमें वर्कआउट करना होता है, इंटेंस वर्कआउट करना होता है, तो हम हाई हिप हॉप म्यूजिक चलाते हैं। एंड स्पेशली नॉर्थ इंडियंस तो भंगड़ा और पंजाबी चला के करते हैं, राइट? तो वो हमें एक राइट, अलग लेवल की इंटेंसिटी देता है एनर्जी की। राइट, राइट, बट अब हमें वो ऐसा वर्कआउट नहीं करना, हमें ईजी करना है चीज़ों को, तो सूदिंग म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, okay, ठीक है? अराउंड अस वी कैन पुट अ सूदिंग म्यूजिक ऑन द फोन और ऑन अ स्पीकर। इजी लाइट म्यूजिक शुड वर्क फॉर इट। जब तक okay, हमारा एम्बियंस सॉफ्ट नहीं हो, थॉट प्रोसेस सॉफ्ट नहीं हो सकते, हम टेंस्ड ही रहेंगे, राइट? सो वील प्रिपेयर कि हम म्यूजिक अपने आसपास बहुत अच्छा और सॉफ्ट लाइट रखें। नेक्स्ट वी कैन हैव इज, जो हमारे साथ पार्टनर है उनके साथ हम कंफर्टेबल हो। इट कैन बी योर हस्बैंड, इट कैन बी योर मदर इन लॉ, इट कैन बी योर मदर, योर सिस्टर, एनीवन हु इज अ कंपेनियन टू यू। उसके साथ आप बातचीत करिए, उसके साथ जो भी आपको डिस्कस करना अच्छा लगता है वो करिए। फ्यू पीपल लाइक क्रैकिंग जोक्स, right? So they do crack right, joke. They talk about what series they have seen. They talk about whatever yes, they want to. Now, while coming to the exercises, I told you there are three phases of labor. First, उसमें contractions का जो intensity frequency है वो कम होता है, right? उस टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, दूसरे पार्टनर के ऊपर लीन कर सकते हो, अब लेट के कुछ एक्सरसाइजेस करना चाहते हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, म्यूजिक सुनना है, किसी पे मेडिटेट करना है, कोई मंत्रा चेंट करना है, आप इजीली कर सकते हो। वो आपकी कोई भी एक्सरसाइज पे हैम्पर नहीं करेगा पेन। जब हम सेकेंड स्टेज में जाते हैं जिसमें रिग्रस पेन होता है, पेन का इंटेंसिटी बढ़ जाता है, और अब हमें फील होना शुरू होता है कि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। उस टाइम पे हमारे लिए एक्सरसाइजेस का इम्पोर्टेंट रोल है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उस टाइम पे रोल है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। ब्रीदिंग के साथ मेडिटेशन, ब्रीदिंग के साथ रिलैक्सेशन, कुछ भी बोलो, ब्रीदिंग पे काम करोगे आप अपने आप पे काम कर सकते हो। सो इजी करने का है अपनी ब्रीदिंग के साथ खेलना। अगर एक बार थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके भी सोचें तो वी सी कि जब भी हमें मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है, तो सबसे पहला कमांड होता है अपनी सांस पे फोकस करें,
राइट? हाँ जी। डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, खुद पे फोकस करने के लिए हम अपनी ब्रीदिंग के रास्ते को अपनाते ब्रीदिंग। हैं. दैट्स द पाथ वी फॉलो. सांस के साथ अंदर जाओ, सांस के साथ बाहर आओ. दीज आर द फ्यू इंस्ट्रक्शंस जो सब सुनते हैं. अगेन लेबर में हम अपने पेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमें बिल्कुल अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है. स्टार्टिंग में आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर सकते हो. सिंपल, नाक से सांस लो, मुंह से सांस छोड़ो. जितना लंबा सांस लोगे उतना लंबा सांस छोड़ना है. ओनली वन की आई वांट टू गिव ड्यूरिंग दिस फेज इज, अपनी सांस को रोकने की कोशिश मत करिए. इवन व्हेन यू आर पुशिंग योर बेबी आउट, डोंट ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ. कंटिन्यू ब्रीदिंग. इवन इन पुशिंग, जस्ट कंटिन्यू ब्रीदिंग. सांस रोक के पेट की ताकत से जो हम बाहर फोर्स लगाते हैं, दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट. ओके। तो हमें सांस नहीं रोकनी है अपने पूरे प्रोसेस में. अपनी ब्रीदिंग को इजी और कंटिन्यू ही रखना है. राइट? सो ब्रीदिंग इज आवर की टू ईज द लेबर. ओके। As you told about the music, मुझे अपना ही labor का experience याद आया. I had the pain had started and it was getting the pain had started and it was getting a little distinct. I had another lady in the labor room who was already struggling with the pain for since a very long time. So I was getting very nervous with all of that. So मैंने music लगाया and उसके बाद I started listening to all my amazing tracks, जो dance tracks होते हैं, favorite tracks. So the intensified pain started with the Yes. track "Abhi to party shuru hui hai," and I was like, "Oh, it's going to be now." So And the kind of happiness it got and the energy plus the pain, it became very easy for me. I think 20 minutes and more. you know, the more you are in your second phase of labor ना, वो पार्टी शुरू में थोड़ा सा झूमना भी शुरू कर दो ना, वो पता भी नहीं चलता और लेबर पास ऑन हो जाता है. Exactly. Because I think in 20 minutes while I was walking only. So I was told, "Ki, please lie down," and he just came out like easily. So it was pretty easy Yeah, that way. because So you yes, didn't it stress helped. much about it. Because I was stressing, I was actually listening to the part and all. जैसे बोलते हैं कि during your this thing you हाँ, should listen to either relaxing music or parts. yes. I was listening to that, but the lady around me was dealing with the pain since a long time, so Yelling and her shouting because of a intensity pain. increased. Yes, yes. So her intensity increased. So to calm myself down, I started listening to intensified music, and that is how it just came out. The baby just thought कि this is the right time to pop out. So नहीं, yes, जनरली भी हमारे साथ होता है ना कि हमारे आसपास बहुत शोर हो रहा हो और हमें खुद को डिस्ट्रैक्ट करना हो, तो हम ईयरफोन्स लगाते हैं ताकि वो इंटेंसिफाइड exactly. साउंड पूरा ईयर में जाए. लाउड म्यूजिक प्ले कर हाँ, देते हैं. exactly. फिर हम जो चल रहा है उसके ऑल क्रिएट कर लेते हैं और हमें नहीं पता चलता बाहर क्या हो रहा है. सेम लेबर में करना हाँ, है. exactly. बस अपने हाँ, सारी चीजों exactly. को म्यूजिक पे फोकस करो बस. Hmm. And doctor, I also wanted to ask you, which are the exercises that we need to do and the exercises that we should avoid during our last trimester? Exercises that we need to do are the one which gives us opening of pelvis or widening of pelvis. Really used exercise or recommended exercises are like lunges or squatting, or you sit in a butterfly position and you flap your legs. Right? You're allowed for quite good walks. You can go and do cat and camel things. ये जनरली प्रेक्टिस और करी हुई एक्सरसाइजेस होती हैं. जो हमें नहीं करनी है, वो कोई भी चीज़ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जितना हमारी बॉडी उसको अलाउ करती है उतना ही करना है. राइट? ऐसा नहीं है कि हमने स्क्वाट करना स्टार्ट किया, हम पहले कभी स्क्वाट नहीं करते थे या हम रेगुलर स्क्वाट नहीं कर रहे हैं, हम एकदम 90 डिग्री अचीव करने की कोशिश करें, तो वो हमें पुश नहीं करना है अपने आप को. एनीथिंग अगेंस्ट योर बॉडी एक्सेप्टेंस नहीं करना. whichever your body is allowing you to accept and to do, वो सब आप करिए. हर एक्सरसाइज करना आपको अलाउड है. इफ यू डोंट हैव एनी लो लाइन प्लेसेंटा, कहते हैं ना प्लेसेंटा बहुत नीचे है तो बेड रेस्ट करने के लिए बोला गया है, या कोई और कॉम्प्लिकेशन है, अगर गायनेक ने आपको मना किया है, अगर गायनेक ने आपको रेस्ट के लिए बोला है, देन प्लीज डोंट गो अगेंस्ट हर कमांड्स and don't exercise. But if you're given a green signal, then do all the exercises you are comfortable in, but
in your own limits. Don't push yourself extreme in one go. सब करो धीरे धीरे करो. That's what I feel. Okay. एंड एग्जैक्टली अगर आप सिर्फ लेबर में एक्सरसाइज करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा. आई विल बी ऑनेस्ट. ठीक है. अगर आपने पहले कुछ थर्ड ट्राइमेस्टर में या सेकंड ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइजेस की हैं तो आप लेबर में इमीडिएट एक्सरसाइजेस कर पाओगे. अगर आपने पहले ही एक्सरसाइज नहीं की और आप सोचो आप मैं लेबर में सब कुछ कर लूँ तो फिर अटेन करना मुश्किल होगा. सो देयर हैज टू बी प्री प्रिपरेशन फॉर दैट. Okay. या. We'll take some questions from the audience also, Doctor. Yes. There's this interesting question from the audience is asking, is the second baby easier to deliver? Well, yes. In most of the cases, second baby is easier to deliver because first thing is first experience सबके पास है. क्या गलती हुई थी, क्या चीज ने हेल्प किया था, वो हमारे पास होता है. Okay. Second point to this question is that track from where the baby has to come out and come slide out. That's your vaginal canal and stuff. They have undergone this process previous to it also. सो दैट्स Okay. नॉट अ फर्स्ट टाइमर. फर्स्ट टाइम वो ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा उनको मेमोरी होता है कि हमारे साथ कैसे हुआ था, कैसे होना है. सेकेंडली आपके मसल्स ईज हो चुके होते हैं सेकेंड डिलीवरी में. जब फर्स्ट टाइम होता है तो फर्स्ट टाइम योर पेल्विस इज ओपनिंग टू सच अ बिग स्पेस, राइट. तो फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग समथिंग इट इज गोना बी अ हार्डर वन. सेकेंड टाइम में वो ऑलरेडी एक बार स्ट्रेच हो चुका होता है तो कंपैरेटिवली यस बेटर होता है. There's one more question, Doctor, we would like to take. Is it safe to eat during labor? It totally depends upon you, right? Light eating will keep you energized. Okay. Heavy eating, you'll not be able to do it and you'll not be able to take it. Because when we are in a labor process, even our anal canal, the rectum area, is also getting compressed and is also active. राइट. कंप्रेशन आता है तो सिर्फ और सिर्फ वजाइनल वॉल पे ही नहीं आता, रेक्टल एरिया पे भी कंप्रेशन जाता है. स्टूल फॉर्मेशन भी होता है. सो व्हाइल यू आर इन योर नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस समटाइम यू इवन लैंड अप पासिंग योर स्टूल which is completely okay. It's not embarrassing. It's not something you should be scared of. Contractions हो रहा है तो वहां से स्टूल पास होने के चांसेस होते हैं. इसलिए we say don't have anything very heavy. It would be good you maintain a hydration, so have liquids. That's very lighter version of it that will keep you hydrated, energized, and you keep your tummy like हाँ कुछ है पेट में. Okay. Will not be heavy. Thank you, Doctor, for this insightful session. Also, Dr. Saxena, would you have any messages or any message for the audiences who are listening, especially the mothers who are in that phase of, probably just delivering or first-time mothers My conceived? first message is just don't be scared. Don't get carried away by what you have seen on digital media, yelling and howling, and the scaredness of pain that you have seen. डरो मत. राइट. सेकेंड इज बी इजी, बी पॉजिटिव. अपनी बॉडी को स्टिफ करने की कोशिश नहीं करनी. जितना हम इजी करेंगे, जितना हम रिलैक्स रहेंगे, उतना हमारे लिए लेबर फेज से मूव ऑन करना इजी है. Third, when you are into your pregnancy phase, maybe you're in a second trimester, those who are hearing us would be in third trimester, reach out to someone who can prepare you for exercises during labor. There are quite a lot many breathing techniques specifically only for labor. जो एक्सरसाइजेस ब्रीदिंग की हम लेबर में यूज करते हैं वो हम पहले सीख लें तो हम उस टाइम पे आराम से कर पाएंगे. जब हमें ज्यादा पेन होगा, हमें पता नहीं होगा, कोई नया कुछ बताएगा, ऑब्वियसली हम नहीं कर पाएंगे. तो हम पहले से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ जो हम लेबर में करेंगे और वो हमारा लेबर इजी फेस हो जाएगा. Thank you so much, Doctor. That's really insightful, and you've given us really good tips for all the new moms and dads. Also, I'm sure that they'll find this useful, and I think Dad dads has a also, major role to play. They have to keep their would-be mother very happy. exactly. मम्मा को खुश रखो, बच्चा खुश रहेगा, लेबर इजी हो जाएगा. तो डैड का सबसे बड़ा रोल है खुशी मनाने में, Yeah, स्ट्रेस कम exactly. करने में, वाइफ को खुश रखने में. Hmm, true. तो True. They have to be फिजिकल an equal support. फिजिकल पेन मदर जाती है, वो इमोशनल एंड एनवायरमेंटल सपोर्ट फादर को करना है, सो इट गेट्स बैलेंस्ड. Exactly.
Thanks a Thank lot, Dr. Juhi. This was really an insightful session with a lot of helpful tips and a happy session for all the mothers to know that it's not a stressful journey. It's easy if you make it easy. It's just a mind game that they have to play. It's a mind game and a bit of stretching and preparing yourself in advance. All the Exactly. mothers who are listening to us, if they have any difficulty, any queries, they can reach me out on my Facebook or Instagram. I am with the handle as Dr. Juhi Saxena, or you can search me as Arogyam Physio. All right. Both ways will be reaching out to me. That's lovely. Thank you so much. And with that, we'll come to the end of this session today. Thank you to our wonderful viewers who've joined us today and Dr. Juhi for spending time with us and telling us important tips for this. And for more, keep following us on Baby Chakra. Stay tuned for more helpful parenting tips on this platform. Thank you so much. Thank you.